श्रीमती एम शहरबान, श्री पी अब्दुल शकूर, श्री पी मुत्तुकोया, डॉक्टर एम कोयमकोया और श्री पी सैयद मोहम्मद कोया का जो शॉल, एक बोट के शिल्प और साथ में लक्षद्वीप के 300 साल पुराने नक्शे के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल देकर उनका स्वागत सम्मान करेंगे। श्री के.एम. अब्दुल मुतालिफ और श्री अब्दुल गफूर ए.के. जो एनसीपी से हैं। श्री के.एम. अब्दुल मुतालिफ और श्री अब्दुल गफूर ए.के. जो एनसीपी से हैं। डॉक्टर मोहम्मद सादिक जो जेडीयू से हैं। श्री टी.के. अमजद और श्री रफीक जो एलजेपी से हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगी संघ प्रदेश के धार्मिक उपदेशों को, जिनके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, श्री मोहम्मद हुसैन सकाफ़ी और श्री हमजा कोया सकाफ़ी जी को, और मेरा उनसे अनुरोध है कि वह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत सम्मान करें। हमारे साथ हमारे देश के कई पूर्व सैनिक जुड़े हैं आज, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल देश की सीमाओं की सुरक्षा में गुजारे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत सम्मान करें। हमारे पूर्व सैनिक भेंट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं पांचजन्य शंख की मूर्ति। पांचजन्य भगवान विष्णु का शंख है, जिसका कुरुक्षेत्र युद्ध में भी प्रयोग हुआ था। अब मैं बुलाना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी के कई योजनाओं के लाभार्थियों को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए उनका स्वागत करेंगे एक हैंडमेड वुडन बोट और एक शॉल के साथ। इस द्वीप के कॉलेजों के कई होनहार बच्चे जो अपने अपने कॉलेजों के टॉपर्स बने, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो प्रधानमंत्री जी का स्वागत सम्मान करें। सम्मान रूपी ये बच्चे लाए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की 2 पेंटिंग, दोनों जो इन बच्चों ने खुद रची है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ लक्षद्वीप की लखपति दीदियों का, और उनसे विनती करती हूँ कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत सम्मान करें। स्वागत रूपी व लाए हैं कुछ हैंडीक्राफ्ट्स और एक शॉल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल पटेल जी को मंच पर आहूत करना चाहूंगी कि कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करते हुए यहाँ उपस्थित जनमानस हेतु 2 शब्द कहें। प्रशासक महोदय जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज हम सबके बीच उपस्थित विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के महानायक
भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के स्वप्नद्रष्टा, देश को विकास के शिखर पर ले जाने वाले मां भारती के सपूत, हम सबके मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत भारत के परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का संघ प्रदेश की इस पावन धरा में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं एवं हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। हम भारतीय जिनके लिए गर्व का अनुभव करते हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस छोटे से संघ प्रदेश में आपका शुभ आगमन हम सब के प्रति आपके अपार स्नेह और प्रेम दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेशवासी वर्षों से आपका प्रत्यक्ष दर्शन, आपके सानिध्य, आपके मार्गदर्शन के लिए लालायित थे। आज आपने हम सबको वर्षों की अभिलाषा को पूरा किया है। इसके लिए सभी प्रदेशवासी आपके प्रति आभारी है। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अत्यंत संवेदनशीलता के साथ देश के गरीबों, पीड़ितों, वंचित, आदिवासी तथा समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों की वेदना को समझा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास आपकी उत्कृष्ट भावना का ही यह परिणाम है कि आज समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। भाइयों बहनों, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आजादी के अमृत काल में देश ने 2047 तक प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर एक विकसित और महान राष्ट्र बनाने का सपना देखा है। हम सबका यह सौभाग्य है कि विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के क्रम में आज यहाँ एक समृद्ध, स्वस्थ और सशक्त लक्षद्वीप के निर्माण की नींव रखी जा रही है। मुझे यह बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इस छोटे से संघ प्रदेश की जिसकी कुल आबादी 64,000 के आसपास है, सिर्फ 10 ग्रामीण पंचायत है, इतने छोटे संघ प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पेयजल, नागरिक उड्डयन, मत्स्य उद्योग तथा भौतिक विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काफी काम हुआ है तथा कुछ पर तेजी से काम चल रहा है। पूरे संघ प्रदेश को एक मॉडल संघ प्रदेश बनाने के लिए संघ प्रदेश के सभी नागरिक भाइयों बहनों को, मछुआरे भाइयों, जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किया जा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से टेलीकॉम, जलापूर्ति, सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण होने जा रहा है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लक्षद्वीप के निवासियों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, नागरिक उड्डयन, शिपिंग, स्मार्ट सिटी, पावर जैसी कई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं तथा प्रारंभ आने वाले दिनों में होने वाला है। साथियों, आज हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह गौरव का क्षण है कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मान्यवर, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर हमें गौरवान्वित किया है। मैं पुनः प्रदेशवासियों की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ यहाँ के सांसद मोहम्मद फैजल जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। पूर्व जिला पंचायत एवं ग्रामीण पंचायत के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी स्वागत करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे आदरणीय वडील, माता बहनों, लाभार्थी भाइयों और बहनों तथा प्यारे बच्चों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में उपस्थित होना
होने के लिए आप सभी का आभारी हूं तथा हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। एक बार जोर से बोलिए, दो हाथ उठा के, भारत माता की, भारत माता की। मातरम मातरम, मातरम मातरम, मातरम मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद प्रशासक महोदय जी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करती हूँ कि संघ प्रदेश के विकास हेतु प्रस्तावित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास करें और अन्य योजनाओं का उद्घाटन भी करें रिमोट के माध्यम से। In 2014, the man of the masses, the visionary, our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi made a promise for a change to the people of India. Har Ghar Jal, empowerment of Nari Shakti, Swachh Bharat, free rations for the poor, Digital India, direct benefits transfer, housing for all, Ayushman Bharat, prosperity for farmers, unprecedented opportunities for the youth. The Honorable Prime Minister, while fulfilling the promises, set benchmark for various developmental parameters in the country. With the vision and guidance of Honorable Prime Minister and along with the relentless and dynamic leadership of Honorable Administrator Sri Praful Patel, Lakshadweep is witnessing the largest developmental milestone in the archipelago's history. Even after 75 years of independence, the level of development in Lakshadweep Islands has not been commensurate with its potential. However, in the recent decade, the Lakshadweep administration has been ushering in a new development paradigm by focusing on all fronts for the growth and development of the islands. On this historic day, as the islands bloom into a new era, our Honorable Prime Minister is dedicating 5 prestigious projects worth Rs 1,156 crore to the people of Lakshadweep to usher in a positive difference in their lives. Kerala Lakshadweep Islands Submarine Optical Fiber Cable. On 15th August 2020, during his independence speech from the ramparts of Red Fort, Sri Narendra Modi announced the dream project of the submarine optical fiber cable. लक्षद्वीप को भी तेज इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है. The usage of the internet is no longer a luxury to the people of Lakshadweep. Today, we are witnessing Lakshya-Purti. With the guidance of the Honorable Prime Minister, 11 islands of Lakshadweep have 100 Gbps under KLI submarine optical fiber cable connectivity project worth Rs 1,072 crore. LTTD, Low Temperature Thermal Desalination Plant, Kadmath. Even after 75 years of independence, people of Lakshadweep had difficulty in accessing clean drinking water. UT administration tied up with the National Institute of Ocean Technology (NIOT) to develop indigenous and cost-effective low-temperature thermal desalination (LTTD) plant that converts seawater into potable water without reverse osmosis. The LTTD plant at Kadmath is worth Rs 32 crores. IRBN, Indian Reserve Battalion. In 1996, the Government of India announced the allocation of the India Reserve Battalion (IRBN) for 3 UTs including Lakshadweep. Under the UTL administration, the construction of an administrative block and 80-man barrack with all amenities for IRB headquarters was completed at an estimated cost of Rs 19 crore. Solar power plant. The archipelago relied on diesel-based power plants for electricity generation across 10 islands of Lakshadweep with a capacity of 26 megawatt. However, the diesel power plants posed multiple obstacles for the administration. During the 4th Island Development Agency meeting chaired by the visionary Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, it was decided to implement solar power projects in the UT of Lakshadweep.
Keeping up with the commitment, Solar Energy Corporation of India, with the active support of Lakshadweep administration, has successfully commissioned 1.4 megawatt solar power plant in Kavratti at an estimated cost of rupees 16 crore, in line with the commitment of our nation towards green and sustainable energy sources. JJM, Jal Jeevan Mission. With scarce underground freshwater resources and being surrounded by sea, the islanders had to rely on groundwater wells for drinking water. The water supply through the salination plants was also done through street water supply. UT administration under the Jal Jeevan Mission of the Government of India has taken up house-to-house functional tap connection project in all the inhabited islands of Lakshadweep. On the outset, the work in Agatti and Minikoi has already been completed. This marks the beginning of a new era of progress, prosperity and unprecedented opportunities for the people of Lakshadweep, uplifting the islands as a thriving center of innovation on the vibrant tapestry of India. Viksit Lakshadweep, Modi ki guarantee. Today, Lakshadweep is transforming into a model union territory under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, who took the country to new heights of development, and the determination of our dutiful administrator Sri Praful Patel ji. To mark a momentous beginning to a promising tomorrow, the foundation stone is being laid for projects worth rupees 31 crores. The new primary health center in Kalpeni Island is being constructed at a cost of rupees 28 crore. This state-of-the-art facility is designed as a center for healthcare experience, having 32 bed capacity with specialties of general medicine, pathology, microbiology, radiology and ICU facilities. This facility will ensure inclusive, cost-efficient and efficient healthcare to the people of Lakshadweep. The foundation stone of 5 Nandgar's Anganwadis is being laid today in the 5 islands of Androth, Chetlat, Kadamat, Agatti and Minikoi. These facilities are proposed to have child-friendly infrastructure and shall sow the seeds for a promising tomorrow, ensuring holistic development of children aged 3 to 6. This day marks a crucial milestone as it unfolds a new era of development, a beginning of a transformative journey for the people of Lakshadweep. Committed to the ideals of inclusive development, Lakshadweep shall rise as a hub for prosperity, innovation and advancement, paving the way for Viksit Lakshadweep. Viksit Lakshadweep, Modi ki guarantee. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए कई योजनाओं के लाभार्थियों को। इस प्रदेश के कॉलेज विद्यार्थियों के प्रोत्साहन और तरक्की हेतु एक लैपटॉप स्कीम लाई गई, जिससे करीब 190 साइंस स्टूडेंट्स को लैपटॉप की उपलब्धि प्राप्त हुई। उनका प्रतिनिधित्व करते हुए सबसे पहले आ रही हैं कुमारी महासीना। ये बीएससी एक्वाकल्चर की विद्यार्थी हैं। कुमारी रुहियाबी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स कर रही हैं। कुमारी राजीना मोल, जो टूरिज्म इंडस्ट्री पर पढ़ाई कर रही हैं। आगे बढ़ते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आशय को बढ़ावा देते हुए बेटियों की शिक्षा हेतु लक्षद्वीप के कई स्कूल विद्यार्थियों को बाईसाइकिल का तोहफा मिल रहा है। इस स्कीम के लाभार्थियों का प्रतिनिधि बन सबसे पहले आ रही हैं कुमारी हानिया शिहाब। कुमारी फातिमा फरजाना, कुमारी हाफी जिया,
लक्षद्वीप के किसानों और मछुआरों के हित में जारी किया गया किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों में से आज कुछ हमारे साथ हैं। सबसे प्रथम मैं बुलाना चाहूंगी श्री मोहम्मद मुकरम को। श्री शाहजी केपी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लक्षद्वीप में करीब 12,000 से ज्यादा परिवार वालों को लाभ हुआ। इन लाभार्थी परिवारों का प्रतिनिधि बना रही हैं श्रीमती सुहरबी। श्री अब्दुल खादर, श्री अनवरुद्दीन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। राष्ट्र की उन्नति और प्रगति हेतु प्रतिबद्ध हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया हम सभी द्वीपवासियों को अपनी अमृतवाणी से चंद शब्द कहकर कृतार्थ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। लक्षद्वीप के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी, यहाँ के सांसद और लक्षद्वीप के मेरे सभी परिवारजनों, नमस्कारम। एल्ला वरकुम सुखम आण इन बिसु सिकिन्नु। आज लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। मुझे इस बार अगत्ती, बंगारम और कवरत्ती में आप सभी परिवारजनों से मिलने का अवसर मिला है। लक्षद्वीप का जमीनी इलाका भले ही छोटा हो, लेकिन लक्षद्वीप के लोगों का दिल समुद्र जितना विशाल है। आपके स्नेह, आपके आशीर्वाद से मैं अभिभूत हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माइक। ലക്ഷദ്വീപിലെ ഭരണാധികാരി ശ്രീ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ ജി, ഇവിടുത്തെ ലോകസഭാ അംഗം, ലക്ഷദ്വീപിലെ എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലെ പ്രഭാതം കണ്ടിട്ട് മനസ്സ് പ്രസന്നമായി. ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ സൗന്ദര്യം വാക്കുകളാൽ വർണ്ണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ഇത്തവണ അഗത്തി, ബംഗാരം, കവറത്തി എന്നിവിടങ്ങളിൽ എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളായ നിങ്ങളുമായി ഒത്തുചേരാൻ അവസരം കിട്ടി. ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ഭൂമി വിസ്താരം ചെറുതാണ്. എന്നാൽ ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയം സമുദ്രത്തെക്കാളും വിശാലമാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും ആശീർവാദവും കൊണ്ട് ഞാൻ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ कुडुम आंगंगले आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रही, उनकी प्राथमिकता
सिर्फ अपने राजनीतिक दल का विकास था। जो दूर सुदूर के राज्य हैं, जो बॉर्डर पर है या जो समंदर के बीच में है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समंदर के आखिरी छोर के इलाके हैं, वहां हमने उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाया है। भारत के हर क्षेत्र, हर नागरिक का जीवन आसान बनाना, उसे सुविधा से जोड़ना ही केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। आज यहां लगभग 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये इंटरनेट, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം പതിറ്റാണ്ടുകളോളം കേന്ദ്രം ഭരിച്ച പാർട്ടികളുടെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ വികാസം മാത്രമായിരുന്നു. ദൂരെ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാവട്ടെ, അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളാവട്ടെ, സമുദ്രത്തിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളാവട്ടെ, അവയെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ അതിർത്തി പ്രദേശമാവട്ടെ, സമുദ്രത്തിന് നടുക്കുള്ള ചെറിയ പ്രദേശമാവട്ടെ, അവർക്ക് അവരുടേതായ പ്രാധാന്യം നൽകി. ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയിലെയും എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ജീവിതം സുഗമമാക്കുക എന്നതും അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നതും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ഇന്നിവിടെ ഏതാണ്ട് 1200 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളുടെ ശിലാന്യാസവും ഉദ്ഘാടനവും നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്റർനെറ്റ്, വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ളം, ആരോഗ്യം, കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളാണ്. ഈ എല്ലാ വികസന പദ്ധതികൾക്കും നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും വളരെ അധികം അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ നേരുന്നു. एनडीए कुडुम आंगन के लिए बीते 10 सालों में लक्षद्वीप के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। यहां पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 100% लाभार्थियों को कवर किया जा चुका है। हर लाभार्थी तक फ्री राशन पहुंच रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड और आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। यहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। सरकार की ये कोशिश है कि हर लाभार्थी तक सरकारी योजनाएं पहुंचे। डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार हर लाभार्थी के बैंक खातों में सीधे पैसे भेज रही है। इससे पारदर्शिता भी आई है और भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लक्षद्वीप के लोगों का अधिकार छीनने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിൽ
ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു മാർഗവും അവലംബിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഗ്രാമീൺ പദ്ധതി പ്രകാരം 100% ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ഗുണം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ സൗജന്യ റേഷൻ കൊടുക്കുന്നു, കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നൽകുന്നു, ഇവിടെ ആയുഷ്മാൻ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം നിർമ്മിച്ചു, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രം എന്നിവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ലാഭാർത്ഥിയുടെ അരികിലും സർക്കാർ പദ്ധതികൾ എത്തണമെന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം. DBTയിലൂടെ നേരിട്ട് ബാങ്ക് മുഖാന്തരം പണം നൽകുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ സർക്കാർ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും പണം എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ സുതാര്യത കൈവന്നിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അഴിമതി കുറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്നു, ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങളുടെ അധികാരം അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് കവർന്നെടുക്കുന്ന ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല എന്ന്. एनडीए कुड़ुम आगंगले साल 2020 में आपको मैंने गारंटी दी थी कि 1000 दिन में आपको तेज इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाएगी। आज कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो गया है। अब लक्षद्वीप में भी 100 गुना अधिक स्पीड से इंटरनेट चल पाएगा। इससे सरकारी सेवाएं हो, इलाज हो, एजुकेशन हो, डिजिटल बैंकिंग हो, ऐसी अनेक सुविधाएं और बेहतर होगी। लक्षद्वीप में लॉजिस्टिक्स सर्विस का हब बनाने की जो संभावनाएं हैं, उनको भी इससे बल मिलेगा। लक्षद्वीप में भी हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाला नया प्लांट इस मिशन को और आगे बढ़ाएगा। इस प्लांट से हर रोज 1.5 लाख लीटर पीने का पानी मिलेगा। इसके पायलट प्लांट्स अभी कवरत्ती, अगत्ती और मिनिकॉय आइलैंड में लगाए गए हैं। എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, 2020 വർഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി 1000 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം കൂടിയ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം എത്തിക്കുമെന്ന്. ഇന്ന് കൊച്ചി ലക്ഷദ്വീപ് കടലിനടിയിലൂടെയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി ലക്ഷദ്വീപിൽ 100 ഇരട്ടി വേഗതയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിലൂടെ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ, ചികിത്സ, വിദ്യാഭ്യാസം, ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് ഇങ്ങനെ പലവിധത്തിലുമുള്ള സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. ലക്ഷദ്വീപിനെ ഗതാഗത സേവനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ഇത് സഹായിക്കും. ലക്ഷദ്വീപിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും പൈപ്പിൽ വെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള ജോലികൾ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് വെള്ളത്തെ മധുരമുള്ള വെള്ളമാക്കാനുള്ള പുതിയ കേന്ദ്രം ഈ പദ്ധതിയെ കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കും. ഈ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും പ്രതിദിനം 1.5 ലക്ഷം ലിറ്റർ കുടിവെള്ളം ലഭിക്കും. ഇതിന്റെ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള പ്ലാന്റുകൾ കവറത്തി, അഗത്തി, മിനിക്കോയ് ദ്വീപുകളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. एनडीए कुड़ुम आगंगले साथियों, लक्षद्वीप आने पर मेरी मुलाकात अली मानिक खान जी से भी हुई। उनकी रिसर्च, उनके इनोवेशन ने
इस पूरे क्षेत्र का बहुत कल्याण किया है। ये हमारी सरकार के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें साल 2021 में अली मानिक अफान को पद्मश्री से सम्मान देने का मौका मिला। भारत सरकार यहाँ के युवाओं को आगे पढ़ने के लिए, इनोवेशन के लिए नए मार्ग बना रही है। आज भी यहाँ युवाओं को लैपटॉप मिले हैं, बेटियों को साइकिल मिली है। हाल के वर्षों तक लक्षद्वीप में कोई उच्च शिक्षा संस्थान नहीं था। इस वजह से यहाँ के युवाओं को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। हमारी सरकार ने अब लक्षद्वीप में हायर एजुकेशन के लिए नए संस्थान खुलवाए हैं। आंड्रोट और कदमत आइलैंड्स में आर्ट्स और साइंस के नए कॉलेज खोले गए हैं। मिनिकॉय में नई पॉलिटेक्निक्स बनाई गई हैं। इससे यहाँ के छात्रों को बहुत फायदा हो रहा है। എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ലക്ഷദ്വീപിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അലി മാനിക്കഫ്ജിയുമായി കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ, നവീന ആശയങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ പ്രദേശത്തിനും വളരെ അധികം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സർക്കാരിന് അദ്ദേഹത്തിന് 2021 പത്മശ്രീ നൽകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. ഭാരത സർക്കാർ ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനായി, പുതിയ ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി പുതിയ മാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിവിടെ ലാപ്ടോപ്പ്, സൈക്കിൾ എന്നിവ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നാം നൽകി. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ലക്ഷദ്വീപിൽ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സ്ഥാപനങ്ങളില്ലായിരുന്നു. ഇതു കാരണം ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നു. നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ലക്ഷദ്വീപിൽ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ആന്ത്രോത്ത്, കടമത്ത് ദ്വീപുകളിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസിന് പുതിയ കോളേജുകൾ തുറന്നു. മിനിക്കോയിൽ പുതിയ പോളിടെക്നിക് നിർമ്മിച്ചു. ഇതിലൂടെ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ അധികം ഗുണമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. एंडे कुडुम आगंगले साथियों, हमारी सरकार ने हज यात्रियों की सहूलियत के लिए जो प्रयास किया है, उसका भी लाभ लक्षद्वीप के लोगों को मिला है। हज यात्रियों के लिए वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। हज से जुड़ी ज्यादातर कार्रवाई अब डिजिटल होती है। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की भी छूट दी है। इन्हीं सब प्रयासों की वजह से उम्राह के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ സർക്കാർ ഹജ്ജ് യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യത്തിനായി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഹജ്ജ് യാത്രക്കാർക്ക് വിസ നിയമങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹജ്ജ് യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റലാക്കിയിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ വനിതകൾക്ക് സ്വയം സഹായികളില്ലാതെ തന്നെ ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള സമ്മതവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉംറയ്ക്ക് പോകുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. एंडे कुडुम आगंगले, आज भारत सी फूड के मामले में भी वैश्विक बाजार में अपना शेयर बढ़ाने पर बल दे रहा है। इसका लाभ भी लक्षद्वीप को मिल रहा है। यहाँ की टूना मछली का एक्सपोर्ट अब जापान को होने लगा है। यहाँ एक्सपोर्ट क्वालिटी की फिश के लिए अनेक संभावनाएं हैं जो यहाँ के हमारे मछुआरे परिवारों का जीवन बदल सकती है। यहाँ
सीवीड की खेती से जुड़ी संभावनाओं को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। लक्षद्वीप का विकास करते हुए हमारी सरकार इस बात पर भी पूरा ध्यान दे रही है कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ बना ये सोलर पावर प्लांट ऐसे ही प्रयास का हिस्सा है। ये लक्षद्वीप का पहला बैटरी बैक्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट है। इससे डीजल से बिजली पैदा करने की मजबूरी कम होगी, इससे यहां प्रदूषण कम होगा और समुद्री इकोसिस्टम पर भी कम से कम प्रभाव पड़ेगा। എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഇന്ന് ഭാരതം മത്സ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ വിദേശ കമ്പോളത്തിൽ സ്വന്തം പ്രാതിനിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഗുണവും ലക്ഷദ്വീപിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ടൂണ മത്സ്യം ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ കയറ്റുമതിക്കായുള്ള ഗുണമേന്മ, ആ ഗുണമേന്മയുടെ സാധ്യതകൾ ഇവിടെ വളരെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മത്സ്യപ്രവർത്തകരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഇത് മാറ്റിമറിക്കും. ഇവിടെ സീവീഡ് മത്സ്യകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതകളെ പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ വികസനം സാധ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതിക്കൊരു കോട്ടവും തട്ടരുത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുമുണ്ട്. ബാറ്ററി ഊർജ ശേഖരണ സംവിധാനത്തോടൊപ്പം നിർമ്മിച്ച സൗരോർജ ഉൽപാദന കേന്ദ്രം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയത്നത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് ലക്ഷദ്വീപിലെ ആദ്യത്തെ ബാറ്ററിയുടെ പിൻബലത്തോടുള്ള സൗരോർജ ഉൽപാദന കേന്ദ്രമാണ്. ഇതിലൂടെ ഡീസൽ ഉപയോഗമുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിലൂടെ ഇവിടുത്തെ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനും സമുദ്രത്തിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മേലുള്ള പ്രഭാവം കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में भी लक्षद्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत सरकार लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। हाल में ही जो G20 की एक मीटिंग यहां हुई है, उससे लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत लक्षद्वीप के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। अब तो लक्षद्वीप के पास 2 ब्लू फ्लैग बीचेज है। मुझे बताया गया है कि कदमत और सुहेली द्वीप पर देश का पहला वाटर विला प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। लक्षद्वीप अब क्रूज टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। 5 साल पहले की तुलना में यहां आने वाले टूरिस्ट की संख्या लगभग 5 गुना बढ़ी है। आपको ध्यान होगा, मैंने देश की जनता से अपील की है कि वो विदेश घूमने से पहले देश के कम से कम 15 स्थानों को देखने जरूर जाएं। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। मुझे विश्वास है, जिसने एक बार यहाँ के सुंदर बीचेज को देख लिया, वो दूसरे देश जाना भूल जाएगा। എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃതകാലത്ത് വികസിത ഭാരതം നിർമ്മിക്കുന്നതിലും
ലക്ഷദ്വീപിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഭാരത സർക്കാർ ലക്ഷദ്വീപിനെ അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ എത്തിക്കാൻ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം G20 ഒരു യോഗം നടന്നു. അതു കാരണം ലക്ഷദ്വീപിന് ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പരിചയം വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വദേശി ദർശൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ലക്ഷദ്വീപിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപ് 2 നീലക്കൊടി നാട്ടിയ കടലോരങ്ങൾ ഇന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലുണ്ട്. എന്നോട് പറഞ്ഞു, കടമത്തും സുഹേലി ദ്വീപിലും രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ജലവില്ല പദ്ധതി നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. ലക്ഷദ്വീപ് ഇപ്പോൾ വിനോദസഞ്ചാര കപ്പലുകളുടെ ക്രൂയിസ് യാത്രയുടെ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 5 വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള കണക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കും പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും, അന്നത്തേക്കാൾ 5 ഇരട്ടി വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ഇന്ന് ലക്ഷദ്വീപിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും, ഞാൻ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് വിദേശങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ 15 സ്ഥലങ്ങളെങ്കിലും നിർബന്ധമായി കാണാൻ പോകൂ എന്ന്. വിദേശങ്ങളിൽ സമുദ്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വിഭിന്ന ദ്വീപുകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് എൻ്റെ ആവശ്യം, നിങ്ങൾ ആദ്യം ലക്ഷദ്വീപ് നിർബന്ധമായി കാണൂ എന്നാണ്. എനിക്കുറപ്പുണ്ട്, ഏതൊരു വ്യക്തി ഒരു തവണ ഇവിടത്തെ സുന്ദരമായ കടലോരങ്ങൾ കണ്ടുവോ അയാൾ പിന്നെ വിദേശത്ത് പോകുന്നത് മറന്നു പോവുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന്. എൻ്റെ कुटुंब आगंगले, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ईज ऑफ लिविंग के लिए, ईज ऑफ ट्रैवल के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए केंद्र सरकार हर संभव कदम उठाती रहेगी. लक्षद्वीप विकसित भारत के निर्माण में एक सशक्त भूमिका निभाएगा. इसी विश्वास के साथ आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई. എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, ജീവിത സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ, യാത്രാ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ, വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. ലക്ഷദ്വീപിന് വികസിത ഭാരത നിർമ്മാണത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട്. ഈ വിശ്വാസത്തോടെ ഏവർക്കും വികസന പദ്ധതികളുടെ പേരിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. നിങ്ങൾ ഏവർക്കും വളരെ വളരെ നന്ദി. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी. बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. वंदे 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 भारत माता की. खड़े होके बोलिए भारत माता की. तो लक्षद्वीप के लिए आज बेहद ही खास, अहम, महत्वपूर्ण दिन और आज 1150 करोड़ रुपए की जो saying, hey, Niccolo, you had 15 minutes of 15 has become 20, has become 25. That president was completely focused on, and he actually told me, he said, just ignore those people. And he told me at the end of it all, he said, you know, everything that you are doing applies equally in my country. Everything. So why I say this to you is, I spoke to you about the impact we are making, the motivational impact. I spoke to you about generosity of heart. But you must also realize everything we are doing today is relevant to the world. It is relevant not just to the developing world.
it is relevant even to the developed world. And it is, I give you an example of it. Just a few days ago, the Financial Times had an article. The Financial Times article pointed out, it said the number of cashless financial transactions in India last year were 90 billion. Okay? Oh, wait. Do you know how many cashless transactions there were in America? Would anybody even like to guess? 2.8 billion. Even China had 17.6 billion. So I want especially the young people to understand this. You are embracing change on a scale and intensity with a passion. Even you don't know the revolution you are creating around you. This is today the new India. This is the India which, if it carries on for the next 25 years, will be the Viksit Bharat that we are all aspiring to. So, I must tell you, the reason the Foreign Minister has come is to draw encouragement, hope, sustenance from all of you, but also tell you that this 25 years is your era. It's your achievements, your talents, your motivation that will decide really where India is going. Now, I have spoken to you about the world, about, in a way, some of the achievements which has had an impact. But the truth is also, the world is a very tough place. The world is a very tough place. You can see that, you saw it during COVID. You can see it in terms of today, the impact of conflict. You can see it in terms of the security challenges. You can see it in terms of climate events. So, but what is necessary for all of us to understand is that the world matters to us. That era where the world was beyond our borders and we were safe inside our borders, that era is now over. Borders are actually, in terms of sovereignty, extremely important. But when we speak about globalization, everything that happens in the world outside will impact your life, and everything you are doing here, particularly if you're doing it on scale, in terms of a different level of achievement, that will also impact the world. And I say this to you because this is today the world in which we have assumed the G20 presidency. So why is our G20 presidency different? Because, you know, there have been other countries who have done G20 for a variety of reasons. The first reason is actually the chair. The fact is, India has assumed the G20 presidency at a moment when India is mattering more and more to the world. It is mattering more to its world, partly because of our economic achievements, that from number 12 or number 10, we have now become the number 5 economy. It is mattering because today, whether it's technology, it could be digital, it could be our talent. I gave you Chandrayaan as an example, but you can see it in other ways as well. That we are today recognized as essential to the global workplace, to the global talent pool. It matters because we also today have demonstrated a capability. We have demonstrated a capability of helping other countries. I spoke to you about vaccine supplies, but you can see even today in, you know, some country has an earthquake. Turkey had an earthquake earlier this year. We were among the first countries who were able to send a contingent out there to rescue people. But it's also because we look after our people. The respect that we get in the world because we look after our people, when we went into Ukraine under Operation Ganga to get our students out, or when we went to Sudan under Operation Kaveri to
rescue people, 5,000 people who are working in Sudan. So in the eyes of the world today, it is our economic achievements, it's our technology capabilities, it's our talent pool, it is actually our capabilities, and it is a fact that all of this is done as a democracy. This combination puts India in a very special position, and therefore India's presidency of the G20 has expectations and responsibilities which are very exceptional. Now, one part of it is, as I say, it's about us and how we are perceived. But it's also the decisions we made about how we are going to conduct our presidency. Typically, a presidency is done in meetings. I have attended maybe more than 10 G20 meetings in my life. Mostly conference hall hota hai, log aate hain, airport se conference hall jate hain, meet, have a dinner, sign some piece of paper and you go. So if you look at the impact on the society or the input of the society, there is very little. This G20 presidency is completely different. You know, we use the word Jan Bhagedari, and truly we mean it. This is the first G20 certainly I have seen in my long career, where the people of the country, where every region, multiple cities, different walks of life, from colleges to professional associations to the ordinary citizen, feels connected to that G20. And we are doing it because in Prime Minister Modi's view, in his vision, we want to use the G20 to prepare to make the world ready for India, that India which all of you are going to make. We also want India to be ready for the world. We want especially the younger generation, and we want the cities and towns and the states and union territories of India to actually understand fully the opportunities and the possibilities in the world out there. And in the last year, the difference we have been able to make is we have not done the G20 as an official program, we have done it as a national celebration. And that is actually a G20 with a difference. Now, what is the challenge in the G20? There are two big challenges. One is what is called the divide between the North and the South. The developed North is a term for developed countries. South is a term for developing countries. So, Viksit Desh hai, jo Vikashsheel Desh hai. So, their gap, their divide which has been growing. And secondly, the polarization that we see today between the what you can call the East and the West, particularly as a result of the Ukraine conflict. So you have an East-West problem, you have a North-South problem. Guess who is in the middle? That's us. It is our responsibility today to find a way of bringing the world together, and we are confident of discharging this responsibility precisely because, as I said, we have today a respect in the world coming from our governance, coming from our economy, coming from our technology, coming from our independent foreign policy stance. So that sense today that this is a fair India, a generous India, a connected India, that these people will conduct their presidency responsibly, taking every view into account and find a landing ground which will be acceptable to everybody. That is today the task before the G20. Now, I had mentioned the world is a very difficult place, and it is a difficult place because, as I noted, we had a once-in-a-century pandemic, COVID, and COVID has had a terrible consequence across the world. You know, there are parts, in India at least we have recovered in many ways.
I must tell you, many parts, many countries have not been able to recover the manner in which we have. Secondly, the conflict, because again, it has shown today how much the world matters to us. That a conflict is taking place in Ukraine, an entire continent away. And that conflict is today creating problems in fuel cost, in availability and prices of food grains, in the access to and the price of fertilizers. It is actually creating inflation across the global economy. So the COVID, 3 years of COVID, a year of this conflict, already large parts of the world were struggling with debt issues, trade issues. And then we are seeing more and more climate events. And climate events of a very large kind, which actually impact an entire economy, entire country, sometimes an entire continent. So how is this reflected? We are seeing this in the challenges that we have to address. The debt and inflation, I spoke to you. By the end of this decade, we are supposed, all the developing world, we should have attained what are called sustainable development goals. That means better health, better education, better literacy, better nutrition, better living, better water, better energy. The truth is, after 3 years of COVID, a year of this conflict, other problems created by globalization, the world is not going to get to its targets. This is one of our biggest worries. A second big worry, everybody says climate action, but the resources for the climate action are not there. Countries are not putting, especially the developed countries, are not putting the money which they had committed to. So how do we today address these problems? These are really the big concerns. And these concerns, it starts somewhere, it will end up somewhere else. I mean, the moment, for example, you see that there is less resource for education or for health, in almost every society, the impact is borne more by girls than by boys. Because every family, family in the world prioritizes. So what happens is, you can have a situation where the resources of the society are less. We think of it as a budget problem, we think of it as a debt problem, but it is finally a social problem. That if there is somebody who doesn't go to school, sadly, it is often the girl who doesn't go to school. If somebody's health or there's a shortage of food, So all the progress that the world has made in terms of health, in terms of nutrition, in terms of gender, in terms of education and literacy, today these are the question marks which are facing the world. This is why today our G20 presidency is exceptionally important. That we have to get the world to focus on the real problems. These are the real problems of the world. And when we take the lead, because as I said, we are seen as a fair country, we are seen as a generous country, we are seen as a country which has always thought of the world while thinking of itself. So we have the credibility today to lead, especially in the last 10 years, when people have seen, the world has seen, we have built an inclusive society in India. And they know that a country which builds inclusiveness at home will also support justice abroad. So what we did this year was that we started our G20 in a very unusual way. We started it not by engaging our G20 partners. We deliberately engaged the countries who are not coming for the G20. We asked 125 countries who are the developing countries of the world and told them, saying, look, we will be talking to those 20, and there are another 9 countries who will be guests. So these 30. But you have concerns. You are worried about sustainable development goals. You are worried about debt. You are worried about climate. You are worried about gender. You are worried about health. So
we sat with them, Prime Minister himself and many of us ministers. We sat with 125 countries in January of this year for what we called the Voice of the Global South. So this G20 will be a different G20 because we have made Global South not only part of the lexicon of international relations, we have put Global South on the conscience of the world. That is what will actually play out in the first week of September. So do understand today that in all of this, our achievements, our capabilities, everything that we have done, because I must tell you, when, as someone who probably spends half my time traveling abroad, the world is fascinated by what is happening in India. That when the conversation I spoke to you about, that when I tell a foreign leader, we give food support to 800 million people, they cannot believe that number. When you tell them that under, say, Mudra, we give loans to 400 million people, that under Awas Yojana, and all of this is in the last 10 years, that in 10 years, 150 million people are living in new homes because of the support given by the government. 95 million women today are not breathing firewood because of the Ujjwala program. That you have, as I said, Anna Yojana, 80 crores, 800 million people who get the essential nutrition because of food from the government. Or under the Jan Arogya Yojana, 1/3 of our country, more than 1/3 of our country today, is actually getting access to health. And all of this is possible, just like those cashless financial transactions. It is possible because we have today made that big leap into becoming a digital society. That digital society is the basis for the good governance that we have seen for the last 10 years. And if we can take it forward for another generation, for 25 years more, I can assure you that we will be in a completely different zone. So what I would like to do is finally, because I want to leave some time for questions. So I will end finally with one more thought for your consideration. I've spoken about our achievements, about technology, about leadership, about vision. But finally, never underestimate the power of ideas. That today, India is actually seen, and our Prime Minister personally is seen, as a very powerful propagator of ideas. And I saw that for myself when I was still ambassador in the United States in 2014. He came up with the idea of an International Day of Yoga. Okay. To be very honest, many of us, and I would admit to you very honestly, I myself didn't fully appreciate what a global impact it would make if you can actually get the entire world on a single day to realize what the practice of yoga, what the benefits of yoga can be. And if you see since then, we have changed the world's thinking about solar energy through the International Solar Alliance. Today, we are trying to change the world's food habits through the International Year of Millets. We have created a collective way of responding to disasters through a coalition of disaster response. In fact, one of the really imaginative ideas is something called One Sun, One World, One Grid, where actually you can keep generating energy as the sun travels through the world, and if you have the grid will keep passing that energy. So the whole perception today of India is not just a happening place where these big leaps of technology are made. It is also a place, a country which is today seen as responsible, which is seen as innovative,